Hi guys, welcome to OS Hub. How are you all? So guys, बहुत ही इवनिंग बैच रो बहुत डिमांड थिला कि आमे मॉर्निंग बैच स्टार्ट करथलु मॉर्निंग बैच फुल हेलानी सो इवनिंग बैच रो डिमांड थिला तो सेइथ पई आमे डिसाइड करलु कि इवनिंग बैच स्टार्ट करिवु खास करके जो माने वर्किंग प्रोफेशनल्स हेले हाउस वाइफ हेले किंबा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो माने पीजी करूचंती इवन ग्रेजुएशन करूचंती सो एमानकर जो आशा थाए कि आमे सिविल सर्विस प्रिपरेशन करूँ बट आमको टाइम परमिट करूनी सो तापाई आमे लॉन्च करूचु द न्यू इवनिंग बैच से इवनिंग बैच रे आपण माने बेसिक रु फाउंडेशन रु स्टार्ट हम आज आम सहित 4 जन फैकल्टी अच्छा जानी समस्ते टिके रेन इश्यू अच्छी सो आज जी जार सब्जेक्ट विषय कहे सो मु इंट्रोड्यूस करी आमर जो मैडम मैंने अच्छा मैडम अच्छा सार अच्छा सो आमर श्रीनिवास सर जी कि आपणकर इकोनॉमिक्स पढ़ेबे श्रीनिवास सर इकोनॉमिक्स पढ़ेबे देन आमर भावतोष सर जी कि ज्योग्राफी आपणकर ने मोर देन मु कही से रखे कि मोर श्रीनिवास सर मोर देन 8 इयर्स पाखापाखि एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस प्रिपरेशन रे पिला पढ़ेबारे देन सिमिलरली भावतोष सर जी कि भी पाखर प्राय पाखापाखि 8 to 10 इयर्स एक्सपीरियंस एंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ये मेंटर कर सारे यू वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड देन आमर मैडम अच्छा जी कि आपंकर पॉलिटी सेक्शन देखिए आमर शुभश्री मैडम सो समस्ते सब्जेक्ट विषय कहे ता पूर्व आम स्टार्टिंग करवा इकोनॉमिक्स रु आमर श्रीनिवास सर कहे सर मैडम टी आप बस जातु आमर श्रीनिवास सर आपन को इकोनॉमिक्स विषय देखिए सो आमर जो द 30 मतलब है कि आम मैक्सिमम 30 स्टूडेंट गोटे बेच रखुचु एंड 30 स्टूडेंट पर आम आमर जोटा कि एडमिशन क्लोज कर दो एनरोलमेंट क्लोज कर दो एवं सेटा ऑफलाइन एंड एज वेल एज ऑनलाइन रोची सो आप जो मैंने ऑनलाइन भी नौचन से माने रेस्ट एश्योर दैट दे विल गेट बेस्ट मेंटरशिप एंड वन ऑन वन गाइडेंस तो द 30 बैच आपंकर सब्जेक्ट वाइज सब फैकल्टीज अच्छा डेली क्लास टेस्ट वीकली क्लास टेस्ट और वीकली मेन्स टेस्ट हम आपंकर डेली आंसर राइटिंग भी और डेली रिविजन भी आप दिज्व सो एवरी सब्जेक्ट आम डिटेल प्रिपेरेसन करवा 6 अगस्ट रु आपंकर क्लास स्टार्ट हो इवनिंग टाइम रो 5:30 रु 8:30 5:30 रु 8:30 आपंकर टाइम रो पर्यंत भी स्ट्रेच हो जाए इन द इवनिंग सो आप से अनुसार आप जो मैंने प्रिपरेशन आग को चाहते सो आप करूँ आप आगे देखूँ आपंकर श्रीनिवास सर आप इकोनॉमिक्स आपन को आइडिया देवे इकोनॉमिक्स केमती कौन मॉड्यूल रोचे सो ये पूरा स्टैंडर्ड मॉड्यूल रोचे जोटा कि बहुत यूपीएससी एज वेल एज ओपीएससी रोचे सो ओवर टू श्रीनिवास सर थैंक यू सर सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सी जो पीडीएफ टा मु करची एटा यूपीएससी पर्सपेक्टिव रु करची बट स्टिल मु ओपीएससी पर्सपेक्टिव रु किछि आपन कहबी बट फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक मॉड्यूल फॉर यूपीएससी सेशन लेट्स स्टार्ट सी हमर एजेंडा कोन रहबो सी एजेंडा first of all we need to understand what is the importance of economics in UPSC civil service exam then we have to go through this syllabus prelims as well as mains then what is the role of previous year questions then syllabus then which newspapers and books to read and what would be our approach to economy first of all what is the importance of economics in UPSC jodi ame dekhiba importance apun dekhibe from 2020 to 2024 including 2025 apun dekhibe pakha near about 30 marks question pakapaki out of 100 marks 30 marks questions achi economy ro so that makes economy a heavyweight champion so far as the UPSC is concerned fine so near about 30 marks question is from 2020 to 2024 including 2025 30 mark question economics ru ase so that makes economics a heavyweight champion this is the importance of economics in UPSC civil service exam now see this is the trend of questions if you look at the last 10-year trend जदि आम गत 10 वर्षर ट्रेंड देखा ताले देखो ये प्लीज सी हियर सबुठ बेसिक क्वेश्चंस को टॉपिक रो आछि मैक्रो इकोनॉमिक्स रो आछि इन द लास्ट 10 years near about 36 questions have been asked from the macro economics the next important topic is your banking
banking, planning, no, not banking, banking. 27 questions have been asked from the chapter of banking. Okay, so this is the trend of questions. को topic रू गत 10 वर्ष रे कितना questions आछी, this is the trend. तो हमको accordingly सब टॉपिक्स कवर करिया पड़ियो. प्रथम हम कवर करिया कोन मैक्रो इकोनॉमिक्स रे आपन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी रहइबो. फॉर एग्जांपल पोवर्टी हे गला, अनएम्प्लॉयमेंट हे गला, इनइक्वालिटी हे गला, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन. सो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स रे रहइबो, जोतर सबटु बेसिक क्वेश्चंस आछी यूपीएससी रे. ओपीएससी रे टिके कंपैरेटिवली कम ही आछी. Then आम फोकस करिया बैंकिंग, देन प्लानिंग ऊपर किसी डिस्कस करिया, देन मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो. सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो थ्रू आवर सेशंस. नेक्स्ट इज दैट आप देखिए सिलेबस देखिए. द सिलेबस इज सो वेग इन नेचर. आप देखो सिलेबस एते वेग वे रे प्रेजेंट कराई जे by simply looking at the syllabus you may not be able to comprehend which topics to cover. आपण कहि परिबेनी जे को टॉपिक्स आपण को कवर करिवार अछि simply syllabus को देखिकी. See, for example, economics and social development such as sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector, initiative, etc. The syllabus is presented in such a vague manner that you may not be able to comprehend which topics to cover by simply looking at the syllabus. So, जदि आपन को जानिवार अछि कौन टॉपिक्स आपन को कवर करिवा पड़िबो, then you have to go through the previous year questions. जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिबे ताले आपण जानि परिबे जे कौन टॉपिक्स आपण को कवर करिया पड़िबो. सो फॉर एग्जांपल देखो एटी क्वेश्चन देछि, अ डिक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स लो इकोनॉमिक ग्रोथ. नो नीड टू आंसर. वर्तमान केवल मैं आपन कहूची एई जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अछि, पर्टिकुलर क्वेश्चन आछि पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी रो. जदि आपण पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, किंतु जदि आपण सिलेबस देखिबे कोठी मेंशन हेनी पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी. Similarly, the second question, next question, a question that देखिए, which of the following factors or policies were affecting the Indian rupee in recent times? ये जो particular question अच्छी है, अच्छी external sector and exchange rate room. But this particular topic has not been mentioned in the syllabus. So this is the role of previous year questions. यदि आपन को जानिबार अच्छी कौन topics आपन cover करिया पड़िबो, then you have to go through the previous year questions. Okay. So then comes your nature of questions asked in prelims. यदि हमें prelims देखिबा different nature of questions पचारंती prelims रे. So okay. So देखो first of all what are the nature of questions? Fact based questions. Okay, fact based questions आपन को पचारिबे. This is one of the example of fact based questions. Fact based questions आसे, then आपन को see, then concept based questions भी आसे, concept based questions. Okay, then comes your trend based questions. Trend माने कोन? ट्रेंड माने होची गत 10 वर्ष कि गत 5 वर्ष रे इंडिया रो इनकम ग्रो करूची, माने स्टेडीली ग्रो करूची ना स्टेडीली फॉल करूची ना ग्रो करूची फॉल करूची ना वोलेटाइल अछि. बुझ पारले? दिस इज द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस. फाइन. फॉर एग्जांपल जिम लिखा है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड. एटा ट्रेंड पचाउची गत 10 वर्ष रे रियल जीडीपी, इंडिया रो रियल जीडीपी स्टेडीली इंक्रीज करची. बुझ पारले? ए ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस भी आसे. ऑफ कोर्स दिस फर्स्ट इज रॉन्ग. तो दिस इज द trend based questions. Then comes your application based questions. Application based questions टिके डिफिकल्ट सॉल्व करवा, टिके डिफिकल्ट कहीं ना एगुड़ा को आपन को कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करिया पड़िबो विथ आपन को इकोनॉमी रे कोन चली छी. सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर. तो आम एगुड़ा को भी कवर करवा. फाइन. सो देयर आर डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपन बुझी पारले. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हे गला, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हे गला, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस हे गला, देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हे गला. देन कम्स योर स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस. स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस भी पचारंती. फाइन. सो दीज आर द डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. एबे वर्तमान देखंतु यूपीएससी मेन सिलेबस जदि आपण देखिबे, मेन सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे प्रेजेंट कराई छी. द मेन सिलेबस आपण देखिबे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे प्रेजेंट कराई छी. तो वर्तमान सिलेबस रे जहां भी अछि आपण जदि एति की कवर करि परचंती, देन इट इज मोर देन इनफ. ओके. देन एटा हम जस्ट गोटे एग्जांपल देइथिली जे एक्चुअली मेंस रे क्वेश्चन केमती आसे. फॉर एग्जांपल व्हाट इज इन्फ्लेशन. आपण हमें क्लास रे डिस्कस करले व्हाट इज इन्फ्लेशन, हमें क्लास रे डिस्कस करले व्हाट इज स्टैगफ्लेशन. किंतु सपोज देखो क्वेश्चंस केमती आसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. Stagflation often induces panic among policymakers due to its conflicting economic signals and discuss the dilemmas it creates in balancing inflation control and economic growth. तो आम क्लास रे ही डिस्कस करिवा व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन. किंतु जदि आपन को ए क्वेश्चन रो आंसर करिवार अछि ताहले आपन को रेगुलरली न्यूज पेपर पढुथुवा दरकार, नहले आपन ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपन आंसर करि परिबेनी. काइना ए जो एटी लिखा हिची जे व्हाई स्टैगफ्लेशन इंड्यूस पैनिक अमंगस्ट द पॉलिसी मेकर्स,
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ प्योरली एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जदि आप न्यूज पेपर रेगुलरली जदि पढ़ुना ताहले यहीपरि क्वेश्चन आप करें तो एफर्ट मोर भी रहिबो एफर्ट आपनकर भी रहिबो बुझिपारछन्ती सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ओके एंड व्हाट बुक्स टू रीड देखो मार्केट रे बहुत गुड़ा रेफरेंस बुक अच्छी बुझिपारछन्ती सो किछि रेफरेंस बुक मु आपनको एठी लिखि देइछि नहले आपनको जोटा पसंद आपन किनि परिबे फॉर एग्जांपल विवेक सिंह नितिन सिंघानिया गुड बुक्स एंड जदि कॉन्सेप्ट्स बुझिवार अछि देन के शंकर गणेश देन संजीव वर्मा भी भलो बही एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़िया पड़ो एनसीईआरटीज देन न्यूज पेपर्स आप जोटा भी चाहिए कवर करेंगे हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजेट एगुड़ा हम इंडिपेंडेंटली देखा ओके क्लास रे देखा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजेट एंड गोटे मंथली मैगजीन आपंकर जोटा पसंद से देखिए हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक सर्वे देखो इकोनॉमिक सर्वे जब आप देखिए प्रति वर्ष आप जानते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गोटे डॉक्यूमेंट रिलीज करे जहाँ कहते इकोनॉमिक सर्वे फाइन जदि ये डॉक्यूमेंट आप देखिए तो ये डॉक्यूमेंट पाखापाखि 600 रु पाखापाखि 700 पेजेस डॉक्यूमेंट सो प्राय स्टूडेंट्स माने एस्पिरेंट्स माने एंटायर डॉक्यूमेंट को तो पढ़ती तो मुझे एक्चुअली हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक सर्वे को किमिति आप पढ़े 700 पेजेस डॉक्यूमेंट को कवर कराटा डिफिकल्ट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट तो किमिति आप पढ़े मु एंटायर अप्रोचटा पीडीएफ रे दे देछि आपण मुझे बुझेबी भी क्लास रे फाइन हाउ टू अप्रोच इकोनॉमिक सर्वे फॉर एग्जांपल को चैप्टर्स को आपको देखा पड़ो बहुत रिलीजियसली आपको देखा पड़ो को चैप्टर्स को आप केवल ओवरव्यू करेंगे ओके सो दिस इज द अप्रोच एंड सो यहाँ थिला कौन मोर ओरिएंटेशन इकोनॉमिक्स ओरिएंटेशन सो इवनिंग बैच स्टार्ट हो 6 ऑगस्ट रू एंड आपण मैंने समस्त जॉइन करूँ केवल ये बैचटा प्रोफेशनल्स मानक होची पर्टिकुलरली जो मैंने एक्चुअली जॉब करती से पाखे हुए तो मॉर्निंग रे टाइम न थाए कि आफ्टरनून रे टाइम न थाए तो से इवनिंग बैच गोटे स्टार्ट कराऊँगी सो प्लीज जॉइन एंड सेशन रे आमे देखिबा भल से बुझा इकोनॉमिक्स को डिटेल रे बुझा कॉन्सेप्ट्स बुझा एप्लिकेशंस भी जोटी दरकार आम एप्लिकेशंस भी आम इंटरलिंक करके बुझा जे एक्चुअली कौन चली इकोनॉमी रे फाइन थैंक यू ओके सी थैंक यू श्रीनिवास सर सो गाइज आप देखिले कि केते डिटेल रे सर बुझेले आपनकर इकोनॉमी सर्वे हो या पूरा डिटेल रे इकोनॉमी मेन्स ओरिएंटेड हो सो यू केम टू नो सो मुझे आउ जने सर को डाकिबी जी कि हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस इन ज्योग्राफी एवं ज्योग्राफी रो इम्पोर्टेंस कौन आपको सर डिटेल्स कहिबे कि रिगार्डिंग ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी प्रिलिम्स पाई कौन इम्पोर्टेंट मेन्स पाई कौन इम्पोर्टेंट एंड एज वेल एज ऑप्शनल केमिति बेनिफिट दबो एवं तार इम्पोर्टेंस ये रे केमिति आपनकर इंटरव्यू रे केमिति ता ऊपर डिटेल्स डिस्कशन हबो सो आई रिक्वेस्ट बापतु सर प्लीज कम थैंक यू सर गुड इवनिंग एवरीवन सर तो प्राय बहुत भल भल जिनस इकोनॉमिक्स विषय कहीकि गले मु खाली गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट कहीदे कि जितेबाला भी आप को भी सब्जेक्ट को अप्रोच करूँगी काइंडली से जिनस को घोषंतु ना बुझा को चेष्टा करूँ सर जो कथाटा कहीदे गले एबे कि इकोनॉमिक्स विषय आप बुझा को चेष्टा करूँ कहीं टीचर्स मैंने ये अच्छा आपको बुझेवा तो आप जिते भी चेष्टा कर जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सबुटा को बुझा को चेष्टा करूँ ज्योग्राफी गोटे ये सब्जेक्ट जोटा कि बहुत ही डायनामिक आपड़ निजे देखुं कि एबे मासे पूर्वर आमको बहुत आर्टिकल्स आसला बहुत पॉडकास्ट आम देखिले बहुत न्यूज आर्टिकल्स आम देखिले जो कहला कि एल निनो ईयर ये वर्षा हम ना ए वर्ष मरुड़ी पड़ जापर देयर विल बी ड्राउट लाइक कंडीशन इन इंडिया किंतु आप निजे देखिए तापर एमिति वर्षा है दैट नाउ ओडिशा इज ऑल फ्लडेड कोस्टल ओडिशा इज फ्लडेड बिकॉज there are other dynamic aspects of geography which are coming into picture तो आमको से गुड़ा भी पढ़िया को पड़ो कि कौथ पई कौन होची जेमिति आपण गोटे सब्जेक्ट को अप्रोच करूचंती से सब्जेक्टटा अप्रोच आपण एमिति करंतु कि तारा गोटे मल्टी डायमेंशन रे आपण से जिंसटा को बुझिबे को भी सब्जेक्ट हो आम जब ज्योग्राफी को अप्रोच करबा ज्योग्राफी को आम डिवाइड कर दबा ज्योग्राफी को हमें डिवाइड कले हमें दीटा पार्ट को डिवाइड करिया फर्स्ट हमें फिजिकल ज्योग्राफी अदर इज इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी को आगो हमें डिवाइड करबा जियोमॉर्फोलॉजी
climatology, oceanography, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ fourth ଗୋଟେ extra add କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର environment and ecology. It's a different subject, but I'm including it in geography. Geomorphology as a subject is all about the physical phenomena happening on your earth, the forces operating on the earth. सेमानकर मैनिफेस्टेशन केमिति वोल्केनिज्म हे गला आपनको पई अर्थक्वेक हे गला माउंटेन बिल्डिंग हे गला ठीक अछि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हे गला एगुडा सबु आमे पढिबा जियोमॉर्फोलॉजी ठीक अछि तापरे सो मोस्टली लिथोस्फियर ओरिएंटेड जति पाठ आमे मॉर्फोलॉजी रे पढि क्लाइमेटोलॉजी रे आमे एटमॉस्फियर ओरिएंटेड जिन सोडा करबा आपनको पई वर्षा केमिति होउची साइक्लोन्स केमिति हो जाए को जगार क्लाइमेट केमिति मॉनसून डा कहीं की होउची यस इंसोलेशन कौन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कौन विंड सिस्टम केमिति ऑपरेट करे एगुडा सबु आमे पढिबा क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी आउ गोटे डायनामिक पोर्शन जोठी आमे पढिबा कहा विषय ओशियनोग्राफी टा आमे पढिबा आपनकर कौन ओशन वाटर विषय ओशन वाटर सैलिनिटी ओशन वाटर टेम्परेचर यस आमे पढिबा आउ क्या विषय आमे पढिबा ओशन वाटर मूवमेंट विषय यस तो यही सब जिन गुड़ा पढ़ा ओशनोग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी आजिका डेट रे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे हो जाइए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो थे कि सब किसी आप करेंट क्लाइमेट चेंज रु नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग रु नहीं कि बाकी जेती रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अच्छी सब एथरे ही आसुची आपनकर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तो सेटा ऊपर भी हमें फोकस करिया बिकॉज दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर क्लाइमेटोलॉजी ठीक अच्छे आ या पई सबुठ बेस्ट बुक इज योर 11th क्लास एनसीईआरटी बेसी बही पढ़ा दरकार नहीं जिन को बुझिया चेष्टा करंतु ता सहित गोटे बहुत भल बही अच्छी जो डायग्रामेटिकली बहुत जिन एक्सप्लेन करछन सेटा ला जीसी लियोंग ये दुटा बही पढ़ जी आपण ये कॉन्सेप्ट्स पढ़िले तार गोटे एप्लिकेशन रहिबो इंडिया बेस्ड तो इंडियन ज्योग्राफी आमे पढ़िबा इंडियन ज्योग्राफी रे कौन पढ़िबा इंडियन फिजियोग्राफी इंडियन क्लाइमेट इंडियन सॉइल इंडियन वेजिटेशन एगुड़ा सब आमे पढ़िबा सेटा तार ही एग्जैक्टली तार कौन तार एप्लिकेशन एथिपाई भी 11th क्लास रो इंडियन ज्योग्राफी गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल दोच क्वेश्चंस केमिति आसे क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स देखंतु भाबी नियंतु मिडिल ईस्ट रे एबे गोटे वॉर चलची लेट्स से ईरान ने चलची तो से ईरान आउ इजराइल रो कोन झगड़ा चलची ता विषय यूपीएससी केबे क्वेश्चन पचारिबनी ईरान ने देखबे दीटा बहुत इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस अछि जैग्रोस एंड एल्बर्स तो सी आपनु मैच द फॉलोइंग रे से मिसै देई परिबे तो दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट rather they will ask you about the geography associated with the conflicting areas तो आपण जेते बेले भी पढ़िबे करंट अफेयर्स सब बेले पढ़िबे से एरिया रो ज्योग्राफी कोन सेठी नदी कोन बहुची सेठी डेजर्ट कोन अछि सेठी पहाड़ कोन अछि सेठी आउ कोन फिजिकल फीचर्स अछि तो एई जिंसो गुडा पढ़िले आपण को मार्क्स आसीबो जेमति टिके समय पूर्व सर आपण को दउतले क्वेश्चंस केमिति आसीबो तो एइतरे ज्योग्राफी रे क्वेश्चंस एमिति आसे पूरा एप्लीकेशन बेस्ड केमिति एप्लीकेशन करि परिबे आपण जहा पढ़ी चंती तार ऑन द करंट अफेयर्स ठीक अछि तो एई बेस रे आमे ज्योग्राफी पढ़िबा ज्योग्राफी गोटे एई भलिया सब्जेक्ट जोटा कि बहुत ही डायनामिक बही पढ़िबे ताको एनालाइज करिया चेष्टा करे कि यार फिजिक्स सहित टिके रिलेशन अछि तो आपण एनालाइज करिया चेष्टा करे ए जिंसटा काहे की होछ बिकॉज ज्योग्राफी गोटे सब्जेक्ट व्हिच इज ऑल अबाउट फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम वेरियस डायमेंशंस आपण थरे धर से जिनसटा बुझी गले आपनकर पूरा सब्जेक्ट ही क्लियर हो जिवो तो मोर कहवा कथा कि जितेबाला भी आप ज्योग्राफी को अप्रोच कर एज अ सब्जेक्ट यही भाया अप्रोच करेंगे कि आपड़ ताकू टिट बाय टिट बुझे केमी माने पूरा गोटे गोटे जिनस तार केमी बुझीपारे से ही भाव में पढ़े घोषा को केबे भी चेष्टा करेंगे ना
बुझीगले धर ये पूरा चिर जीवन आपन को मन रही आउ केबे भी आप भूली पारे। आउ गोटे जिनस देखो लोक कहते कि जियोग्राफी डिफाइन्स हिस्ट्री। तो आपड़ देखिए जितेबाला भी आप गोटे सब्जेक्ट पढ़ुं सब तार इंटरलिंकेजेस देखिए अलग सब्जेक्ट। जियोग्राफी लिंक्स अच्छी सोसाइटल मैटर्स उपर, जियोग्राफी लिंक्स अच्छी इकोनॉमिक्स सहित, जियोग्राफी लिंक्स अच्छी हिस्ट्री सहित। तो आपड़ ये पढ़े कि जेबे आप टोटाल गोटे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखिपारे, मल्टी डायमेंशनली आप जिनसा बुझीपारे। तो से हिसाब से आप जियोग्राफी पढ़तु। ठीक अच्छे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो आपण मैंने देखिले कि जोग्राफी रे तार इम्पोर्टेंस कौन एवं खास करके जोग्राफी एनवायरनमेंट मिसेले आपनकर प्रिलिम्स रे पाखापाखि 30-35 क्वेश्चंस आसुची एंड एज वेल एज मेन्स रे पाखापाखि 125 पाखापाखि मार्क्स आसुची आपनकर जीएस पेपर 1 रे। देन आउ गोटे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सेलर जोटा कि मेजर सब्जेक्ट आम अभी डिस्कस करूँ। देन आई विल डिस्कस अबाउट अदर सब्जेक्ट। सो आपनकर मेजर सब्जेक्ट रे आपनकर आउ गोटे सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत प्रिलिम्स रे जो लेज मेन्स रे यार बहुत इंपोर्टेंस अच्छी कहीं आप जानते कि पॉलिटी गोटे एमती सब्जेक्ट कहते कि पढ़ीदे एटलिस्ट आपनकर ये हो जाए काम माने एग्जाम रे आप आराम से करें। सो से पॉलिटी गोटे सब्जेक्ट मोर और लेस इजी कंपेयर टू अदर वास्ट सिलेबस सब्जेक्ट। बट हाँ ताकू भी पढ़ा पड़ो, ताकू भी बुझे पड़ो। सो ताकू बुझेबे आमर शुभश्री मैडम जी की पॉलिटी सेक्शंस नेबे। पॉलिटी रे आपण बहुत सारा वेराइटी ऑफ ये पाइबे। सो मैडम ओवर टू शुभश्री मैडम। थैंक यू सर। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखो पॉलिटी पढ़िया मेन जिनस हो मोस्टली पॉलिटी इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सो एवरीथिंग शुड नॉट बी रेड एंड some things cannot be skipped. So mainly polity is also a very static subject and also a very dynamic subject. तो first हमें देखिबा first topics कौन कौन रहिबो static रे। so जदि हमें देखिबा static topics, so it consists of constitutional framework, then your rights, principles, or you can say duties, then union and state government, then your local government, constitutional or non-constitutional bodies, or you can say statutory bodies, then some other topics like your language, official commissions, all these. So these will be your static topics. A through questions asibata thoyo. Then comes the dynamic part. Dynamic माने कौन बुझिबा? Dynamic माने होचे जोड़ा current events कहियो बोले। तो current events रे which consist of your schemes, bills or acts, जो भी ऐसे policies, even some judgments like Supreme Court judgments, these are also very important. So it is a very vast, both in static and even in dynamic perspective. Then if we go, then eta hala, then prelims re hardly 15 to 20 questions ase. In prelims UPSC or OPSC 15 to 20 questions ase. In this 15 questions, 10 questions comes from the static. It approximately, you can say approximately 10 question comes from the static, and then rather 10 or 5 questions comes from the current affairs. So you should be comprehensively reading it in a thorough manner, okay, both with static and current. Then जे नुआ पढ़ुची एबे सेमानक पई कोन करि परिबे जो माने टोटली साइंस बैकग्राउंड रो अछंदी या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड रो अछंदी, फॉर देम स्टार्ट रीडिंग NCERT of class 9th, that is democratic politics. Start from this book, then go for 10th, go for NCERT
10th class book, that is Democratic Politics 2. Okay, then with progress with this, because 8th रे तमे कौन तुमको डेफिनेशंस मन रहबो, तुमको कांसेप्ट बुझा पड़, नॉट कांसेप्ट बुझा पड़िबो, तुमको जानिया को पाइबो तमे राइट्स रो माने कौन, लिबर्टी रो माने कौन, ए सब रो डेफिनेशंस जानिबो इथरे. Then only you can go to the advanced book. Then go with your 11th. Then start, then proceed to your advanced books, which every UPSC aspirant read it, that is Lakshmikant. It is a very, very important book in your preparation because it is a complete guide of your Indian polity. And if anyone is preparing for mains also, then a very important book is there, that is D.D. Basu's Constitution of India. So this book is also very important. Those who are preparing for mains or after completing these books, if you go for D.D. Basu, then also it is a very important. But jehetu am pakhare time constraint bhi achi, so I would say go for these books and Lakshmikant for a conceptual understanding. Even prelims, jehetu prelims re 15 to 20 questions ase, I would say that mains holds a very big role in Indian polity because GS paper 2 completely belongs to Indian polity and governance. आमे अबे interstate भी देखुछु जेहेतु OPSC रे, and in UPSC international relations. So to understand even the international relations, Indian polity is very important. So gote hi gala, जेहेतु इटा prelims रे, you can see that 15 to 20 question ase. But in mains, GS2 paper is important for Indian polity. Then after that, your essay paper is also important. If you are thorough with the concepts of Indian polity, then you can also write good essays. Okay. Then ए सबु आ बादे तमे कौन करि परिबो, because जेहेतु टाइम कॉन्स्टेंट अच्छी सबु अच्छी आमु करंट अफेयर्स भी पढ़ियार अच्छी. हाँ, करंट अफेयर्स पाई you should daily read newspapers or the magazines, like you can see Yojana, Kurukshetra, ए सबु पढ़ियाटा बहुत important because ए सबु जिनस रे तुमको schemes जाना पड़िबो, policies जाना पड़िबो, bills कौन आछे जाना पड़िबो, what the government is planning to do for future, even सेटा भी तुमको जाना पड़िबो. So because of that, so if you cannot read the Yojana completely, so go with the YouTube analysis. Okay, it is very much easily available in any of the tame YouTube re maro Yojana, you can get it. So newspapers and I would say Yojana and Kurukshetra. So these are your current affairs. So when we were preparing, I know that most of the students had issue with the current affairs. So I would say do not focus on the current affairs now if you're starting. Focus on your static topics, like your subject oriented topics. धीरे धीरे जेतोळ प्रोग्रेस करिवो, then you will understand कोन करंट अफेयर्स रे आछी, न्यूज दिल्ली रे या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन रे एतिकी क्वाई थाए सबोले दैट करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ो, बट न्यूज़पेपर सबु पढ़िया भी दरकार नै. Skip some of the political issues. Even if you are reading it, नो कि से पॉलिटिकल इश्यू रो कोन तमे जानि परिबो, लाइक देबे जेमति सीजेपी प्रोटेस्ट हेतिला, से प्रोटेस्ट रो तमे कोन जानि परिबो दैट यू नो द डिमांड्स, यू नो व्हाट हैपेंड इन जंतर मंतर इन दिल्ली, बट आउ कोन एक्स्ट्रा जोडा कि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे नेसेसरी, दैट इज राइट टू प्रोटेस्ट को आर्टिकल रे आछी, से आर्टिकल रे भी कोन कोन रेस्ट्रिक्शंस अछि, कोन एक्सेप्शंस अछि, यू कैन नो दैट आल्सो. इंटरनेट शटडाउन्स होची, ए इंटरनेट शटडाउन केमती को आर्टिकल रे अच्छी या को एक्ट द्वारा, लाइक को जजमेंट द्वारा इंटरनेट शटडाउन, लाइक इंटरनेट एक्सेस को गोटे फंडामेंटल राइट रो दर्जा दिया है, ए सब भी जानिबा दरकार. देन इवन एबे नाउ योर रिजर्वेशन हटाओ, ए सब भी चलची, एथरे भी तुमको यू नो द व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स, but do not forget that you are also an aspirant. You should know what you should read in your exam. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे तुमको जानिया दरकार कि रिजर्वेशन को एक्ट रे आछी, को कोन कोन रिजर्वेशन पई थिला फ्रॉम द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, आई से फ्रॉम हिस्ट्री टू टिल नाउ व्हाट हैज हैपेंड. सो तुमको सबु जानिया दरकार. सो डू नॉट गेट पैनिक्ड, एंड बिकॉज ऑफ
पैनिक न हवा पई तुम कौन कर पारियो इज द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू प्रैक्टिस PYQs ऑफ बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस एंड सेटा साइमल्टेनियसली हवा दरकार तमे गोटे टॉपिक पढ़िलो आज मानि चल तमे गोटे फंडामेंटल राइट्स रो गोटे टॉपिक पढ़लो it is not possible that if you're starting now you can read complete fundamental rights and you will understand it is not at all possible so gote tame article dhallo right article 14 to 18 etiki article right to equality or right to freedom e dita article dharo like e dita rights dharo take google it that ethre kon PYQs aschi practice that at least 10 to 20 PYQs practice करो daily basis रे and even sir भी कही चंदी that weekly test हुए even revision भी हुए so revision is also important so ए जो 10 to 20 PYQs of prelims I am saying prelims are important simultaneously जतल तमे गोटे टॉपिक सरी जाउची गोटे सब्जेक्ट सरी जाउची क्लास रे सरुची या तमे जतल पढुछ भी सरी जाउची then practice about that मेंस रो भी सिम्पली एनालिसिस होची every एमती गोटे मिथ थिला आगो दैट ए टॉपिक रो क्वेश्चन आसीबोनी बट नाउ दिस मिथ हैज बीन लाइक डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बाय यूपीएससी और ओपीएससी कहियो गले बिकॉज क्वेश्चंस कोठु भी आसी परिबो एंड इवन वन मोर योर पब्लिक पॉलिसी इज आल्सो देयर सो ए थ्रू भी क्वेश्चंस आसे इन योर प्रीलिम्स which you would have seen in your OPSC exams if you have given at least one attempt so a through भी आसे तो to understand this public policy also you should have the knowledge of Indian polity then simultaneously I'll say mains amaro mains weekly होची weekly test होची जो थरे तुमको complete mains रो किमती लिखा जाए कौन को मेथड रे लिखा जाए को प्रोसेस तार कौन प्रोसेस फॉलो करियार अछि इंट्रोडक्शन केमती लिखियो बॉडी केमती लिखियो कंक्लूजन केमती लिखियो हाउ टू एंश्योर दैट डायग्राम केमती बनेबो फ्लो चार्ट ए सब जिंस भी सर माने अछंती गाइड करिया पे एंड इवन योर मेंटरशिप इज देयर देन आई वुड से वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग द सेशन दैट डोंट मग अप द आर्टिकल्स in polity बहुत सारा आर्टिकल्स अच्छी लाइक करेंटली 470 या 470 आर्टिकल्स अच्छी सो डोंट एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू सो यू हैव टू स्किप सम आर्टिकल्स ऑल्सो फर्स्ट डोंट मग अप द आर्टिकल्स I would say don't mug up the articles then revision is very important do not skip it if you skip it then you are not going to have like anything जब भी जोड़ा भी पढ़ुच राति से रिविजन कर दियो या फिर नेक्स्ट डे स्किप फॉर नेक्स्ट डे बट नॉट फॉर द अनदर डे देन योर PYQs it is you cannot skip a single PYQ in your preparation because PYQs आउ कौन पे PYQs important because ए PYQs कले तुमको जाना पड़िबो कि किमती टाइप रो क्वेश्चंस आसे even in your dynamic topics रे भी and even in static topic रे भी so ए थ्रू जाना पड़े PYQs रो after PYQs attempt the mock test is also very important because mock test रे कोन हमें PYQs तो घरे बसी भी प्रैक्टिस कर परिया but mock test रे कोन हबो you will know the pressure जतल तमे classroom रे आसी कि classroom environment रे आसी mock test दबो you will know how much pressure it is पिला बसतिबे exam दोथबे it would be 1 hour or 2 hours exam session will be going on you will be having that pressure ए pressure टा जतल तमे mock test रे experience कर दबो then it would be easy to experience in exam first second जिंस होची आ गोटे जिंस भी जानि परिया हमको टाइम मैनेज करिया जाना पड़िबो that how we can manage the time in exam because most of the students fail जेतल जल्दी रे करूथिबे then they will see कि ओ ओके 10 minutes अछि 15 minutes अछि एबे मु फिल कर दिए OMR but से OMR फिल रे ही बहुत भूल हे जाए like 76 नंबर रे बी मारी के आस्तिबे जोडा कि 77 रे बी मारियार अछि so all these things are there so mock test is very important first for your time management and second for your practice कि pressure टा को handle करियार सिखियार अछि because तुमको तो एसी चैम्बर रे बसे कि तुम एग्जाम करबोनी यूपीएससी और ओपीएससी
they will be giving you constant pressure, and se constant pressure re time bhi tick houtbo se time re every noises will be there around you. So that should be handled, and how it can be handled? It can be handled through mock test. So that's all. I'll say that jehetu Indian polity gote like everyone fears for this polity because understanding is very important. So I would say start from the basic, then go to the advanced with the PYQs and the mock test, so that तुमको गोटे holistic preparation हे परिबो. Thank you. थैंक यू सो मच मैडम. सो आज जो सेसन एवं देखिले सो आप पॉलिटी सेक्शन देखिले, ज्योग्राफी देखिले, इकोनॉमिक्स देखिले, मेजर सब्जेक्ट्स गला. सो देन देखिबा कि आम हिस्ट्री these four subject जोटा कि मेजर सब्जेक्ट. हिस्ट्री इज समथिंग जोटा कि वेरी डिफिकल्ट and people thought that it is a subject of factual nature. So it is not like that. It is a subject of very region based study kari paribe, and if you don't study history, you will not understand society, you will not understand polity better, you will not understand governance better, you will not understand ethics better. So history is something जोटा कि you give you base to other subject and as well as essay. So if you see prelims पाखापाखि 15 to 18 क्वेश्चंस आपनकर प्रिलिम्स रे पाइबे हिस्ट्री रे, एंड मेंस रे you will get around 125 marks in GS paper 1, and it will help you, history also help you in GS paper 2. It will help like social justice and as well as polity and governance part. It will help in GS paper 4 ethics, and as well as जोटा कि the philosophical part of ethics is depend on history only, right? Similarly your essay is also having good part. We played very good role in knowledge of history. So history is an overall subject. You need to have command over this subject. So तापाई basically आमे जे देखिबा हिस्ट्री सिलेबस डिफरेंट अच्छी, प्रिलिम्स पाई टिके अलगा अच्छी. मो ओवरऑल सिलेबस कहि दिए. सो इंडियन हिस्ट्री रे आपण मानकर चारिटा पार्ट पाइबे. से आपणकर एनसीएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. देन आउ गोटे पार्ट है बेसिकली आर्ट एंड कल्चर. So Indian history, then as well as another ये है कि उड़ीसा हिस्ट्री. उड़ीसा हिस्ट्री भी आप 3टा पार्ट पाइबे. सेम एनसीएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न. एंड सिमिलरली उड़ीसा आर्ट एंड कल्चर भी मध्य सिलेबस रे पाइबे. ओडिशा आर्ट एंड कल्चर. सो ये सिलेबस रू आपन जे देखिबे, ये सिलेबस रू मेजर पार्ट जे देखिबे एंशिएंट और मेडिएवल, ये पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स, राइट? एंशिएंट मेडिएवल ये पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स ओनली. बट क्वेश्चंस नेचर एमिति कि आपन जानि परिबेनी कोन कोन अलगा आसुची ता पाखु. आउ this part is belongs to mains. Getting? So overall आपण देखिए, but art and culture without history is meaningless, right? You cannot study
you cannot understand art and culture without having the knowledge of history. बिकज इतिहास रु ही आर्ट एंड कल्चर होती सो ये डिफरेंट ये लिखी सिलेबस एम एमती चालाकी कि पिला भी आम जहाँ मेन्स यहाँ पढ़ा पड़ोनी बट या भी ना या गति ना गेटिंग और नॉट सो ट्राई करंतु समस्ते हिस्ट्री को गोटे लॉजिकली पढ़ापी क्रिटिकल एनालिसिस करने रीजन बेस्ड स्टडी करने एंड दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर I'll challenge you, nobody can teach history like this here we are teaching. Because I know so many institute I have seen, so many university I have seen, so many university students came here. But history, they teach us like a history, like a cramming subject, like a mug-up subject. You factually things you remember or you cram everything. This is not like this subject, right? So से अनुसार आम एठू कौन करूँ ना जे सब्जेक्ट जेकोसी सब्जेक्ट आप देखले डिफरेंट फैकल्टीज केमिति तांकर आइडिया थिला केमिति सी माने पढ़ा को केते प्रायोरिटी दिया होची एवं जेहेतु आमर स्मॉल बैचेस से इंडिविजुअल गाइडेंस रोची सो आमर अदर सब्जेक्ट्स भी मध्य जेमती एथिक्स हैला आपनकर भी से भावतु सार भी किसी एथिक्स ने आपंकर मु किसी पार्ट नेबी अर्पिता मैडम अच्छा सो सबू सब्जेक्ट दु तीन जन टीचर्स अच्छा एंड आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा आपणकर डेली क्लास टेस्ट हम डेली डीसीटी आम कहूँ डेली क्लास टेस्ट आपणकर एवरीडे जहाँ पढ़ाला तार रिविजन आपन करिके आसीबे एवं अराउंड 10 क्वेश्चंस डेली रहिबो मल्टीपल MCQs आपनकर पाइबे ओके सिमिलरली आपनकर वीकली 5 to 6 डेज क्लास हम वन डे आम नॉर्मली रिवीजन डे छाड़ू देन संडे आपनकर वीकली मेन्स टेस्ट WMT वीकली मेन्स टेस्ट आपण स्टार्टिंग रु राइटिंग आपण शिखिबे कहीं ना यू नो दिस एग्जाम इज बेसिकली डिसाइडेड योर सिलेक्शन इज डिसाइडेड बाय योर मेंस मार्क नॉट योर प्रीलिम्स इज ए एलिमिनेशन राउंड राइट इट विल एलिमिनेट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड मेंस विल डिसाइड योर फ्यूचर यू आर गेटिंग इनटू द सर्विस और नॉट सो दिस टेस्ट स्टार्टिंग रु आमे करूछु सो दैट आपन को धीरे धीरे राइटिंग प्रैक्टिस हो एवं राइटिंग प्रैक्टिस हेले आपनकर इम्प्रूवमेंट हम कॉपी चेक हम एवं से अनुसार आप पाइपर सो देन आउ गोटे है कि एवरीडे जो क्लासेस हम इनिशियली 5 minutes 10 minutes आपनकर लास्ट क्लास रे कौन पढ़ाई रिवाइज करा राइट सेटा गोटे आपनकर एठू पाइपर एवं जेहेतु आम बैचेस द ना अच्छी द 30 से केवल 30टा पिला रे व्वेन 30टा पिला हो गले आम स्टॉप कर दो एवं बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अच्छी इवनिंग रे आपनकर 5:30 रु 8:39 पर्यंत आपनकर रहिबो क्लास तो आपण जो भी काम करले वर्किंग जी भी अच्छा जदि भी 6टा बेलू पहुँचती आप किसी असुविधा ना कहीं टाइम अच्छी आपण पाखे क्लास स्टार्ट हो 10 मिनट 15 मिनट एमती लेट हो जदि सो आपण कहीं रिविजन वगैरह भी हुए रिविजन लास्ट क्लास रिविजन वगैरह होगी टेस्ट गोटे होथुबो तो से अनुसार आपण 6 रु भी आसले चलिबो सो आपण एई समय रे पूरा जदि आपण डेडिकेटेडली पढ़िया चाहते आउ जेहेतु अल्प पिला आम इंडिविजुअली मेंटरशिप करूँ कहीं एवरी स्टूडेंट हैविंग देयर ओन कंफर्ट जोन ओन वीकनेस तो से अनुसार आम टेकल करूँ एंड ऑनेस्टली वी आर लिमिटिंग द स्टूडेंट बिकॉज वी वांट द स्टूडेंट टू गेट इनटू द सर्विस बेस्ट शुड गेट इनटू द सर्विस जी एफर्ट दब जी सीरियस स्टूडेंट अच्छा से माने आसतु कहीं वी आर गिविंग एफर्ट सो मच एफर्ट फॉर देम सो दैट वी वांट रिजल्ट सो एफर्ट दौचु रिजल्ट चाहूँ एवं आपण भी जी सीरियस अच्छा से माने ये बैच रे एनरोल करंतु वी डोंट वांट नॉन सीरियस स्टूडेंट थैंक यू गाइस सो थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल जय जगन्नाथ नमस्कार।